श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखंडे अथ द्विचत्वारिंशो अध्याय। व्यासवाच। सनत्कुमार सर्वज्ञ हते तस्मिन् सुरद्रुहि किं काशीत तस्तस्य ज्येष्ठभ्राता महासुरा कुतूहलमिति श्रोतं ममास्तहि मनीश्वर तच्छ्रावय कृपां कृत्वा ब्रह्मपुत्र नमोऽस्तु ते। ब्रह्मवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य व्यासस्य स मनीश्वर सनत्कुमार प्रोवाच संवृत्वा शिवपदाम्बुजं सनत्कुमारवाच भ्रातयेर्वं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकश्यपव्यासपयर्तप्यदृशा शुचा तथा प्रजाना कदनं विधान्तु कदनप्रियान् निर्देदेशासुरान् वीरान् हरिवैरप्रियो हि स अथ ते भृत्तसन्देशमादाय शिरसासुरा देवप्राजाना कदनं विदुःकदनप्रिया ततो विप्रकृते लोके सुरस्ते दुष्टमानसे दिवं देवा परित्यज्य भुवि चेरुर्लक्षिता हिरण्यकशिपुर्भरातु सम्परेतस्य दुःखिता कृत्वा क्रोधकादिनी तत्कलत्राध्य सान्त्वयत् तथा स दैत्यराजेन्द्रो राजेयं जरामरम् आत्मानं प्रतिद्वन्द्वं मे कराजयं व्यधित्सत स तेपे मन्दर्द्रोणयां तपापरम दारुणम् ऊर्ध्वबाहुं भूदृष्टिपादागुष्टाश्रितावनी तस्मिंस्तपस्तप्यमाने देवा सर्वे बलान्विता दैत्यान् सर्वान् निर्जित्य स्वानि स्थानानि भेजिरि तस्य मूर्धन् समुदूत सधूमोऽग्रस्तपोमये प्रियुर्गूर्धर्व मधोलोकानत्पद्विषवगीरिता तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुसुरा धात्रे विज्ञापयामासुस्तप्तपो विकृतानना अथ विज्ञापितो दैवर्यास्तैरातम्बुविर्धिः परितो भृग्गुच्छाधैर्यो दैत्येक्षार शमं प्रताप्य लोकानखिलांस्ततोऽसौ समागतं भवं ददर्शवरं हि दातुं तमुवाच दाता वरं वृणीष्यवेति पित्वा महोऽपि निस्मय वाचं मधुरा विधातुर्वचो ब्रवीदेवं मूढबुद्धिः हिरण्यकश्यपुरुवाच मृत्यो ब्रह्मे भगवन् प्रजेश पितामहाभून् कदापि देव शस्त्रास्त्रपाशाशनिशुष्कवृक्षगिरीन्द्र तोयाग्रीपुप्रहारे देवैक्ष दैत्येन मुनिभिक्षसिद्धस्त्व सृष्टिजीवैर्बहुवाक्यता किं स्वर्गे धर्णया दिवसे निशायां नवो भर्वतो नाप्यदप्रजेश सनत्कुमारवाच तस्यैतदृग्वचनं निश्मदैत्येन्द्र तुष्टोऽस्मि लभस्व सर्वं प्रणम्य विष्णुं मनसा तमाह दयाविनतोऽसाविति पद्योनि अलं तपस्ते परिपूर्णकामा समासहस्राणि च शनन्वत्तया उत्तिष्ठ राज्यं कुरु दानवाना श्रुत्वा गिरं तत्सुमुखो बभूव राज्याभिषिक्तः प्रपीतामो महेन त्रैलोक्यनाशाय मतिं चकार उत्साद्य धर्मान् सकलान् भ्रमतो जित्वा हवेशोऽपि सुरान् समस्तान् ततो भयान्द्रिन्द मुखाक्षदेवा पितामहाज्ञां सम्पाप्य सर्वे उद्धृता दैत्यवरेण जाता शिरोदधिं यत्र हरिस्तु शेते आराधयामासु तीव विष्णुं सतुत्वा वचोभिः सुखदं हि मत्वा निवेदयामासुरथो प्रसन्नं दुःखं स्वकीयं सकलं हि ते श्रुत्वा तदीयं सकलं हि दुःखं तुष्टो रमेशा प्रदत्तो वरांस्तु उत्तथाय तस्माच्छयाना तुप्येन्दुर्निजानुरूपैर्विविधैर्वचोभिः
आश्वास्य देवानाखिलान् मुनीन् वा उवाच वैक्षानर्तुल्यतेजा दैत्यं हनिष्य प्रसम्भसुरेश प्रयात धमानि निजानि तुष्टा श्रुत्वा रमेशस्य वच्च सुरेशा शक्रादिकास्ते निखिला हि तुष्टा ययुस्वधामानि हिरण्यनेत्रानुजं च मत्वा निहत्तं मुनीशा आक्षिप्य रूपं जटिलं करालं दृष्टायुधं तीक्ष्णनखं सुनासं सह्यं च नारं सुविदारितास्यं मार्तण्डकोटिप्रतिम सुघोरं युगान्तकालागिंसं प्रभावं जगन्मयं कि बहुर्विभिर्चोभिः अस्तेरवोऽसोऽपि हि गच्छतीशो गतोऽसुराणां नगरीं महात्मा कृत्वा च युद्धं प्रबल्ये स दैत्यहत्वाथ तान् दैत्यगणान् गृहीत्वा ब्रभाम तत्रादुत्विक्रमक्ष बभर्ज तान् सतान् सुरान्रेण्यसिंहं दृष्ट स दैत्यर्तुल्यप्रभावस्तिरेभिर्देहि तथैव सर्वे सिंहं च तं सर्वमयं निरीक्ष्य प्रहात नामादितिजेन्द्रपुत्र उवाच राजानमय मृगेन्द्रो जगन्मया किं समुपागतक्ष प्रह्लादुवाच एष प्रविष्टो भगवानन्तो नरसिंहमात्रो नगरं त्वदन्त निवृत्तयुधाचरणं प्रयाहि पश्यामि सिंहंसकरालमूर्तिम यस्मान् योधा भुवनत्रेऽपि कुरुष्व राज्यं विनमन् मृगेन्द्रनम् श्रुत्वा स्वपुत्रस्य वचो दुरात्मा तमाभीतोऽसि किमित्र पुत्र उक्तवेति पुत्रं दितिजाधिनाथो दैत्यर्षभान् वीरवीरानसराजा गृहन्तु वैसन्ममो भवन्तो वीरा विरूपभृकुतीक्षणं तु तस्य याज्ञया दैत्यवरास्ततस्ते गृहीतु कामा विविशुर्म मृगेन्द्रं शरण्येन दग्धा शलभा इवाङ्गिनी रूपाभिलाषात् प्रविविक्षवो वै दैत्येषु दग्धेष्वपि दैत्यराजाश्कारयुद्धं समृगाधिपेन शस्त्रे समग्रैखिलैस्तथास्त्रे शकत्याष्टिपाषाण्डपुष्पावकाध्ये संयुध्य तौरेव तेऽजर्गाम रामादिनं व्यासी शस्त्रपाण्यो प्रवीरो यो रवीरवेण गर्जतो परस्परं क्रोधः सुयुक्तचेतसो तथा स दैत्य सहसा बहुशक्ष कृत्वा भुजाशस्त्रयुतानि रक्ष नरसिंहरूपं प्रययौ मृगेन्द्र संयुध्यमानं सहसा समन्तात् तथा सुयुन्दं त्वति दुस्सहं तु शस्त्रे समस्तैक्ष तथाखिलास्त्रे कृत्वा महादैत्यवरो नरसिंहक्षयं गते शूलधरोऽभ्युपायात् ततो गृहीत स मृगाधिपेन भुजैरेणके गिरिसारवधि निधाय जानो स भुजानन्तरेषु नखाण्डकुरैर्दार्णवमर्विधि नखासत्रहत्पद्यं सृगीविमिक्षुमुत्त्यपादजीवाधिगतक्षणेन ते यक्तस्तदानीं स तु काष्ठभूता पुनः पुनश्चूर्णितसर्वगात्र तस्मिन् हते देवरिपो प्रसन्ना प्रह्लादमा मन्त्र्यकृतप्रणामं राज्याभिषिच्यादुत्वीर्यविष्णुस्तत् प्रयातो गतिं प्रत्यर्पयाम ततो त्वहृष्टा सकला सुरेशा प्रणम्य विष्णुदिशि विप्रतस्यां ययुस्वधामानि पितामहाद्या कृतस्वकार्य भगवन्तमीडचं प्रवर्णितं त्वद्धजन्म रुद्राद्रिरण्ये नेत्रस्य मृतिर्वराहात् नरसिंहस्तत् तत्सहजस्य नाश प्रह्लाद राजापीतिरिति प्रसङ्गात् शृणुद्वित्तदानीदिज्वर्य मतोऽन्धकप्रभावं भवकृत्प्रलब्धं हरेण युधं खलु तस्य पक्षादना
गणाधिपत्यं गिरीशस्य तस्य इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखण्डे गणाधिपत्यप्राप्त्यन्धक जन्म हिरण्यनेत्र हिरण्यकश्यपो वध वर्णन नाम चित्रचत्वारिंशोऽध्यायः।